And we have some very heartbreaking news for today. Uh, Cristiano Ronaldo is ruled out of the Manchester United and Manchester City derby. I think it's a huge loss for Manchester United. Uh, it doesn't matter what his form is. कुछ भी आप बोल लो. Cristiano Ronaldo is still Cristiano Ronaldo. He has scored 15 times in the last 30 games. Although the last 10 games he has only scored once, but it's Cristiano Ronaldo at the end of the day. बहुत बहुत बड़ा लॉस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. I think it's a little difficult. काफी लोग बोल रहे कि it's a blessing in disguise because Ronaldo won't be there. We could play on the counter attack uh, with the likes of Elanga and Rashfords and Sanchos. But I believe that आप जो आपका बेस्ट प्लेयर है उनका इम्पोर्टेंस कभी भी आप ये इसमें तोल नहीं सकते हो. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ डेविड दहेया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, लाइन तक आता नहीं है. बट देन हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड यू पुट इन फॉर दोज सेव्स दैट ही मेक्स विच आर फिजिक्स डिफाइंग. कितना वैल्यू डालोगे उन चीजों पे? रोनाल्डो इज दैट सिचुएशन, दैट प्लेयर जो आपको एक मैजिकल मोमेंट दे देगा एंड यू इट विल विन द मैच फॉर यू. It's in no way, in my opinion, it's a good thing for Manchester United. I think it's a huge loss. जो दूसरी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, we'll talk about Ronaldo in little more detail, is that apparently, so first of all he has a thigh injury, Ronaldo. उसके सिवा Rafael Varane, Edinson Cavani and Luke Shaw are also out of the game. It's not a good situation for Manchester United to lose so many good first team squad players on this big match. This is very important in terms of top four hopes for Manchester United. On a serious note, I want us to scrape a win out of somewhere, but if we get a draw out of this, it will be a good result for Manchester United. एडिनसन कवानी नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है. So we're gonna start with Marcus Rashford. Do you want to see Marcus Rashford as our number 9 tonight? I don't. Personally, I don't. I would rather see Bruno as number 9. Uh, Sancho and Elanga on the wings. Have a midfield combination of McFred or Matic and McTominay plus Pogba. Varane is the biggest loss today. Yeah. Varane ka calmness. Varane was the glue. Hello, Rivaj. Thank you for joining in. We didn't want to go live, Abhi, but this news has really, you know, दिल तोड़ दिया है मेरा. दिल तोड़ दिया है, honestly. And I'm not one of those who believes in the stuff कि अगर रोनाल्डो नहीं है तो it's really good for us. We can properly play on the counter. नहीं यार. You cannot put an importance to these players in this kind of matches. Apart from that, Varane and Luke Shaw also. So Rewaj is asking what happened to CR7. Apparently, it's a thigh injury. जो सुनने में आया, it's a thigh injury. We welcome Pratyush also here. Hello, Pratyush. Hello. Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, and Rafael Varane are out right now. Cristiano Ronaldo is a big miss. Injury, thigh injury है उनका. But I think with Ronaldo and Cavani, it can be two things. एक या तो फिर राल्फ का जो अभी आया था comment on Rashford that he sees him as a modern striker. तो with Ronaldo and Cavani available, उसको ये चीज प्रॉब्लम होती है. ये पर्टिकुलर मैच में कुछ एक पर्टिकुलर टैक्टिक्स के साथ जा रहा होगा where Ronaldo and Cavani is not needed, तो ये ड्रॉप करने का एक इशू हो सकता है. But I don't see why Ronaldo will not be on the bench. अगर वो injured है then understandable, वरना अगर वो उसका प्लान में भी नहीं रहता, you always keep that kind of a player on bench. If you need them, you can use them. So Ronaldo is a big loss. Hi Vyansh, happy that you are here. Aditya Varane, says I would go with Bailey and Lindelof.
ये I will मैच also में बेली वोंट स्टार्ट. I will not go with Bailey because Bailey is can give you no Bailey के साथ issue क्या है ना मैं बताता हूँ Bailey can give you a number 9 out of 10 performance or he can give you a 2 out of 10 performance उसका बीच का जो है ना कुछ होता नहीं है तो या तो वो बहुत अच्छा रहता है तो बहुत खराब रहता है एंड इफ ही इज गोइंग टू गिव यू 2 out of 10 ना तो 2-3 पेनल्टी देके चल जाएगा वो सो आई वुड नॉट हैव Bailey in this Lindelof and What Maguire would will be be better. what would be your starting lineup now that the situation is already altered? Uh, Hmm. what formation do you want to see and what players you want to see tonight? क्योंकि ये तो बहुत बहुत shocking हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. So जो कल rumors आ रहे थे, a lot of people mentioned in the chat as well on yesterday's show that Cristiano Ronaldo is not available. It's true. तब तक कोई अच्छे सोर्स से आया नहीं था, so we didn't want to. We wanted to take it to the pinch of salt. अब आ गया है. So it's a difficult situation. Pratyush, what will be your formation in the playing 11 today? I will go with 4-2-3-1 then 4-2-3-1 क्योंकि आपके पास वरान नहीं है so that makes it a bit difficult बैक फोर में मेरा रहेगा डेविड डी गया तो ऑब्वियस है बैक फोर वी विल गो विद Aaron Bissaka on the right back Lindelof and Maguire and Alex Telles तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं Shaw is not available I will go with Matic and McTominay as your holding midfielder to pivot, and then in the front four we are going then Paul Pogba on the left wing, Sancho on the right wing, Martial starting and Bruno behind him. Martial, I'm saying Rashford as a striker and Bruno behind him. So I Okay. think that will be okay. ये क्या have the final players final team अनाउंस्ड क्योंकि ऐसा भी हो सकता है लाइक व्हाट हैपेंड विद रैशफोर्ड लास्ट 1 आवर में उसको इन द स्क्वाड इंक्लूड कर दिया गया सो मैकनील कैन बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड इफ नीडेड इन द लास्ट आवर और सो Possible है. This is the information we are getting from some good credible journalist जो online है. Uh, so final squad confirmation तो अभी तक नहीं आया है. It's the people that are available. Aditya says it was stupid of us to make Cavani stay where he clearly wanted to go in January. At least एक striker तो sign कर लेते जैन में. आदित्य कोई स्ट्राइकर नहीं साइन होता हमारे यहाँ तो हमको मिडफील्डर चाहिए था एक डीएम चाहिए था 6 मिलियन पाउंड में मिल रहा था हमने नहीं साइन किया तो कोई साइन नहीं होता जनवरी में कोई साइन नहीं होती तो इट्स ओके दैट वी केप्ट कवानी इट विल बी आई थिंक इज फिफ्थ consequential miss of Derby, fifth continuous Derby miss है इसका. For me, it's done. But Cavani is done. Cavani yeah, for Manchester Cavani, United is done. All yeah, the love and the respect that that guy had from our side, uh, I think we need to have a hard look at it. I think it's not good. अगर तुम आज भी it's not fit good. नहीं Yeah. होते हो after you playing your internationals, you are always available for your internationals. Fuck off. If you don't want to be, just fuck off from the club. I don't care. So for me, I'll share my predicted lineup now. I'll start with David De Gea. Back four would be the obvious ones now. Aaron Wan-Bissaka, Varane, and Harry Maguire. Maguire will start if Varane Rafael is not Varane is available, out. Sorry, Lindelof and Varane. Sorry, Lindelof and no. Harry Maguire. Maguire. As Varane is out, there's no one else who's going to replace him except for Harry Maguire. And I'll start with Alex Telles. Luke Shaw is also apparently out, so I'll start with Alex Telles, which is probably a good thing. Probably a good thing. Uh, in the midfield, I want to see this combination. It's a toss up between Fred and Matic, but I would go with McTominay and Matic. As per the news, Varane is also out, along with Luke Shaw and Edinson Cavani, and Cristiano Ronaldo, the but obvious one. Uh, so midfield would be Matic and McTominay, uh, and I'll go with Pogba and Bruno in a diamond kind of a formation with Bruno as a false number 9. In wings, I want our two informed wingers, that is Sancho and Elanga. I don't want Rashford to start. I don't want Rashford to start. He has no form. We, we can go for a back three as well. बैक थ्री क्यों जाएंगे? आई डोंट आई वी वांट कि हम मिडफील्ड कंट्रोल करें. सो आई डोंट सी अस गोइंग फॉर द बैक थ्री. वी वांट
an extra midfielder, which has to happen, which should happen. Ilanga will play as a winger slash a striker, switching with Bruno, even a little bit of Pogba's and the Sanchos. So that's how I see with a very fluid front four. Matic, the most deeper one, with McTominay could be, you know, uh, play box to box. क्लासिक ओले बॉल इनकमिंग. हे मैच ही मिला आउट होने. हाँ भाई, वेरी वेरी पथेटिक न्यूज. कितना भी लोग बोल ले कि रोनाल्डो, दैट इज द काउंटर दैट रोनाल्डो, it's a good thing that Ronaldo isn't there. We can finally play on the counter. But the one time that we have tried to play on the counter, that was against Atletico, and we were shit. Tonight it has to be better, वरना पहले मैच में मैच खत्म हो जाएगा, पहले हाफ में मैच खत्म हो जाएगा. आज 2 गोल मार देंगे, 2-0 से कम बैक नहीं कर सकते हो in versus City usually. But despite that, United have been known to make comebacks against City. So God knows, this is not a good thing in my opinion. अनारके भाई, ये जो था ना न्यूज दैट रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू बी इन द स्क्वाड एंड कवानी इज नॉट गोइंग टू बी इन द स्क्वाड, वो कल शाम से ही चल रहा है. तो आई थिंक ये, मुझे जहां तक लगता है, ये एक टैक्टिकल ड्रॉप है rather than an injury or something. Ralph has dropped both of them tactically. कुछ काउंटर पे खेलने का कोशिश है या कुछ, बिकॉज लाइक ये से ना मिथ से राइट नाउ कि हमने एटलेटिको के अगेंस्ट काउंटर पे खेलने की कोशिश किया एंड डिड वर्क. So one of the reason it didn't work was Ronaldo doesn't have that pace right now to exploit that space behind him. So maybe not. अभी कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक कि ये प्री प्रेशर नहीं आएगा, प्री मैच प्रेशर भी होगा राल्फ का बिफोर द मैच, तो उस समय बहुत कुछ क्लियर होगा why he is not there. अब तो इंजरी का ही बोला गया, तो I think he will also come out and say it's a thigh injury. So let's see how we line up right now. That is more important. Bruno should play as center forward. False nine I'm हमारे with you. सिस्टम में नहीं काम करता है. False nine हमारे सिस्टम में नहीं काम करता है. वो नंबर क्योंकि 9 का पोजीशन ही लेगा. With Ilanga will be making the runs. Maybe. I'll be happy to see that formation. I don't mind. I really don't mind Bruno as false number 9. False nine हमारे साथ इसलिए नहीं काम करेगा ना अमित, क्योंकि हमारे साथ इशू ये है ना कि false nine, if Bruno goes to false nine or starts playing as a center forward, हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा फिर बॉल का from the center. Pogba है ना. Pogba लेफ्ट विंग पे चल जाएगा ना. In this match, Pogba is gonna start. वो inevitable हो गया है. हाँ. Pogba and Bruno start होना is inevitable. नहीं तो फॉर मी ना, पॉल पोग्बा इज एज अ लेफ्ट विंगर दिस मैच के लिए, क्योंकि मैं उसको सेंटर पे नहीं खिला सकता. ही इज नॉट गोइंग टू ट्रैक बैक जो काम ब्रूनो करता है. We are already, so वो cover करने के लिए we are already going with something like McTominay and Matic or McFred. Let's read Aditya's comment. 4-2-3-1 with McFred has worked well for against them. The front four could be Bruno, Sancho, Ilanga, then decide between Pogba and Rashford depending on the tactics. Nice one. But आदित्य, इसमें फिर एक इशू मेरे साथ ये आता है ना कि 4-2-3-1 में मैकफ्रेड हैज वर्क फॉर अस, बट जब सिटी के अगेंस्ट हम खेलते थे अंडर ओले, व्हेन इट वाज वर्किंग, वी वर बेसिकली अ डिफेंसिव टीम जो कि काउंटर पे खेलते थे. Now with our new style of play and under Ralph, I don't see us playing defensive team, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उसने ट्राई कर लिया एटलेटिको के अगेंस्ट, इट डिडंट वर्क. I don't see him going back to that, being a defensive team and countering the opposition. I think he will go for play proper football. बॉल अपने पास पोजीशन रखने की कोशिश करेगा. He will start. और तुम सिटी जा रहे हो, अपना फिलोसॉफी लेके जाओ. फिलोसॉफी लेके जाओ, ठीक है. Fuck it, मान चुका है जो ही है. You play your football the way you want to play. Okay, you need to be cautious, but then it doesn't fucking matter. आज मैच तुम्हारे टैक्टिक्स इंपॉर्टेंट है ही, बट तुम्हारा फिजिकलिटी, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रोएक्टिवनेस काफी ज्यादा मैटर करेगा. You need to be very very physical. Let City know that we are here to play and to win. City leg against 3 center back at back. Should we try it properly? No, United isn't going back to the LVG back wala three. System, back 3 system. We are done with it. And let me tell you, we don't have players to play that.
जो जो let me आपके tell पास था you, बेस्ट बेस्ट सेंटर बैक एज अ वरान, ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, तो आपके पास तीन सेंटर बैक भी नहीं है जो आपको खिला सके, आप उस पे खिला doesn't सको। matter. United का identity नहीं है to play with back three, and under Ralf Ragnick and the future manager, we are never playing back three. Okay, occasional matches में कभी try किया, that's a different thing. In life, for the next few years, you will not see Manchester United in back three. Sorry. Bruno should not miss the chance. If we get three good chances, we should convert two of them. We have to convert those crucial chances. It's now or never for us. Totally agreed. या Totally agreed. कांट मिस चांसेस इन दिस मैच, दिस मैच में, इस मैच में अगर आप चांस मिस करते हो ना, विद अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट लिवरपूल, ऐसा बहुत बार होता है कि ऑपोजिशन मिस दे चांसेस एंड विद इन मिनट्स दे स्कोर ऑन द अदर साइड, तो यू एक कैन नॉट इंटरेस्टिंग मिस वन बात चांस। बताना है मुझे. सो रैफ रैगनिक का अगर सेकंड पार्ट आपने सुना हो अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, he said that I'm sorry, first part में ही बोला था that Rashford, he sees a Rashford as a striker. मॉडर्न I स्ट्राइकर। think modern striker, and I think it could be a double bluff. It's just for the city. It's just for the आई city, and Pep to think that Rashford might start as a striker, but it could be a double bluff, and इट we कुड बी, might see a false nine and Rashford coming off the bench. या तो फिर दो वाइट वाइट स्ट्राइकर भी यूज कर सकते हैं ना, इफ वी आर गोइंग विद हाँ, डायमंड एज यू आर सेइंग, दो वाइट स्ट्राइकर यूज हाँ, करके और मिड मिड से दो रन बनाएंगे। हाँ, पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल. मजा आएगा. आज टैक्टिक्स देखने में बहुत मजा आएगा. एंड या अगर वी आर नॉट एट इट, विल बी डन. आई एम टेलिंग यू, अगर हम पहली 15 मिनट में अच्छा नहीं खेलते हैं, फिजिकल नहीं होते, अच्छा छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए कि सिल्की पासेस हो पहले 15 मिनट में. इफ वी आर नॉट एट द गेम लाइक एथलेटिको के अगेंस्ट हुआ, विल बी आउट ऑफ द गेम. सेकेंड हाफ का जो वो वूडू आता है अपना पहले 10 मिनट का, वो होगा भी नहीं, उधर पहुंचेंगे भी नहीं, खत्म ही हो जाएगा. तुम 2-0 करके, डिफिकल्ट है सिटी के अगेंस्ट कमबैक करना. इम्पॉसिबल नहीं है, पर बहुत डिफिकल्ट है. West Ham. So Ralph Ragnick also mentioned one thing, that every team that has played against City in recent matches, City have given them big chances. If Manchester या United takes their opportunities, will be able to do something. जो 2 3 4 5 चांस मिलने वाले हैं, you have to convert them. और वो चांस देगी, ऐसा बोला है. City fullbacks play high. They are pacey but not lightning speed. Ilanga and Sancho at the wings could do I the job. I think यहाँ पे क्या होता है ना, against Manchester United, because with their past experience they have understood the speed, the pace that United has in the front three. तो उस पेस को काउंटर करने के लिए सिटी जनरली क्या करती है कि दे यूज वॉकर इन देयर एज वन ऑफ देयर फुल बैक्स, जो कि आपका जब व्हेन दे आर अटैकिंग वो आके आपको एक कवर क्रिएट कर देता है एज अ डिफेंसिव कवर इन फ्रंट ऑफ देयर बैक टू, और जब काउंटर पड़ता है देन ही जस्ट पुल्स बैक टू हिज पोजीशन एज अ राइट बैक, और इफ नीडेड एज अ लेफ्ट बैक, बट जनरली राइट बैक आता है मेकिंग इट अ बैक थ्री, और आपको काउंटर को काउंटर कर देता है वो. So that's why उस full back position में he is very very important, क्योंकि he has got pace and he is probably right now England's best right back. Even though Yeah. Trent Alexander-Arnold is there and in his prime form and in his early ages, in early 20s we have, and he is in 30s, but he's much better than him. Both he has got pace और experience है उसको कि कैसे snub out करना है counters को. So that's the thing that I see City doing on that right side actually. So Shamir says that Raf has dropped Cristiano Ronaldo. Raf out. Uh, I don't think that this theory, it actually works. It's a good theory to have, क्योंकि रोनाल्डो है, तुमको न्यूज चाहिए, तुमको क्लिक्स चाहिए. But I don't see it. Pratyush also mentioned in this video that it could be a possibility, but I don't just see it, क्योंकि इतने बड़े गेम में you have to And have Cristiano Ronaldo. नहीं ठीक है, you have to have, and if even if he has dropped Ronaldo, I don't see why to make such a big fuss of it. Ronaldo has not been scoring left, right, and center. No, ठीक है, he is a big match player and he is a very very big player.
बट इट डजंट रियली मैटर, आपको वो करना होगा जो टीम के लिए अच्छा है, जो तो आपको मैच जिता सके। डजंट मैटर हु इज देयर इन योर स्क्वाड, इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग ही इज लायबल टू बी ड्रॉप। कोई भी रहे, हम पॉल पोग्बा इतना बड़ा प्लेयर, हम मानते हैं ही हैज गॉट अ वर्ल्ड कप इन हिज किटी टू शो, बट अगर वो परफॉर्म नहीं इतना करता बड़ा, है, देन द ही हैज गॉट अ वर्ल्ड कप इतना विथ गाना। बड़ा तो क्या हुआ, फैक्ट जिरूड तो के वही पास बोल भी रहा है। हूँ, दैट इज नॉट द पॉइंट ना। पॉइंट ये है कि उसको उसको ड्रॉप करने के लिए तो हम हमेशा बोल ही देते हैं ना, दैट ही शुड बी ड्रॉप्ड इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग। तो it is not a big deal, yeah. Yes, CR7 is different level, he is something else, he is something this and that, but if it is helping the team to इसमें win, बैकअप भी नहीं है। doesn't really वी matter. डोंट हैव अनदर नंबर 9। We might not be playing number 9, we might be playing a false 9, we might be playing something different. I At the end of the day, if we win, everything is fine. If we perform and we don't win, that's also fine, कि अगर हमने मैच बहुत जबरदस्त खेला, but luckily or unluckily we didn't win the match, तो ठीक है यार, मैच तो हम अच्छा खेल रहे हैं ना, परफॉर्मेंस तो आ रही है। बट इफ वी प्ले बैड एंड वी लूज, दैट इज व्हेन दिस डिसीजन विल बी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे यही आता है कि वो आके खुद क्या बोलता है इन प्री मैच, कि क्यों रोनाल्डो इज नॉट अवेलेबल और ही इज नॉट प्लेइंग। तो वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्या आता है। And Arya says it's about the team, not an individual, even if he is Ronaldo एग्जैक्टली by. एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना। What I'm saying is, डर भी है। Cristiano Ronaldo is still Cristiano Ronaldo. He has that ability to score, to lift up the team, to be a proper leader. And okay, he gets frustrated too sometimes, but then he has that X factor. And in these matches, you need that X factor. You need it. maybe you आज need an X factor, आज maybe you need कोई just फॉरवर्ड simple आज कोई सिंपल फॉरवर्ड काम अगर करना है। एक्सेप्शनल कोई एक्सेप्शनल मोमेंट क्रिएट नहीं करता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विन दिस मैच। नो, आई डोंट थिंक सो। हमको एक्सेप्शनल नहीं, देखो, मी द प्रॉब्लम इज ना, वी ऑलवेज ट्राई टू विन द मैचेस इन एन एक्सेप्शनल वे। आप सिंपल काम करो। मैनचेस्टर सिटी डजंट डू थिंग्स एक्सेप्शनली ऑल द टाइम, दे डू सिंपल थिंग्स टू क्रिएट दैट एक्सेप्शनल मोमेंट। हमको वो सिंपल थिंग्स खाली करना मिस करते हैं हम लोग। इन द मिडफील्ड जो हमको सिंपल पासेस रहते हैं, हम वहाँ पे बॉल प्ले करने की कोशिश करते हैं, बॉल रिटेन करने की कोशिश करते हैं। खासकर पॉल पोग्बा को देख लो, ही स्टेज ऑन द बॉल फॉर टू लॉन्ग, जबकि उसको बॉल पास कर देना चाहिए। इवन व्हेन ही इज सीइंग पीपल कमिंग टू हिम, ही ट्राइज टू बी फिजिकल विद देम, जबकि आपके पास ओपन प्लेयर्स हैं, ऑन द राउंड पास करके बॉल मूव करो स्पेस क्रिएट करने के लिए। हम सिंपल काम नहीं करते। पॉल पोग्बा इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ही इज डूइंग दो सिंपल वर्क्स। Maybe Ragnik, as is going to park the bus without number 9, he might add Jones or Matic. Matic could be a possibility. I don't see, Jones no anywhere near this starting 11. And He Ralph is might be on never the going to bench. park the bus. Ralph is never Yeah, going to park the bus. वो उस तरह का मैनेजर ही नहीं है। he'll be practical, he'll be smart, Yeah, but we are going to have a very physical game in my eyes. Very physical game. Uh, maybe he will go for डू और something. डाई सेज लाइनअप क्या होगा, वी हैव डिस्कस्ड इट थोड़ा पीछे करके, यू कैन हियर आवर थॉट्स ऑन इट। मोस्टली प्रोबेबली ब्रूनो फॉल्स नंबर 9 और रशफोर्ड अप फ्रंट, दोज आर द टू पॉसिबल ऑप्शंस राइट नाउ। और maybe McNeil in the last moment is promoted जैसा रैशफोर्ड हुआ था। You never know. And टफ and I'm टफ। backing on that. I want that to happen. That will be like McNeil coming up from our academy and scoring a winner. That will be I like a don't think he has dream been come true. spotted. एक मिनट, let me check the confirmed squad members. I don't think McNeil is there, otherwise it would have been a news. It's in Manchester ना, City मैनचेस्टर ही में है ना यार, 4 मील का दूरी है दोनों स्टेडियम के बीच में। कॉल करके आ जाएगा चारू शर्मा की तरह। और क्या, एक फोन कॉल पे इज देयर। No, प्लेयर टू वॉच McNeil आउट isn't there. फॉर, प्लेयर हमारे लिए आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी हाउ आवर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेस, जो भी खेलेगा। आई थिंक मैकटोमिने एंड मैटिच रहे या मैकटोमिने फ्रेड रहे, इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी हाउ दे आर प्लेइंग। और फ्रॉम सिटी आई विल से इफ गुंडोगन इज प्लेइंग, he is very very dangerous क्योंकि वो लेट रन आता है बॉक्स एंड वी आर नॉट एबल टू पिक हिम अप।
Yeah. Before I come to your comment, Rivaj, I want to read this out loud, very loud. But that individual has won more and scored more goals than the whole Manchester City players all together. Exactly. Absolutely. वही बात है. वही बात है. He is fucking Cristiano Ronaldo. So, player to watch out for in the both teams. Cancelo for me from City. We need to stop his creation. We need to stop him. And from Manchester United side, it's since Cristiano is out, it has got to be another Portuguese. It has got to be no not Diego Dallo. It's Bruno Fernandes. Has to be Bruno Fernandes. His creation, he maybe shit the whole game, पर वो दो तीन चार ऐसे चांस क्रिएट कर देगा which would win you the match or at least will be able to take something out of this game. That is the impact of Bruno Fernandes. आज अगर वो एथलेटिको जैसा तुमको बुरा लगता है ना, डोंट वरी अबाउट इट, उसका क्रिएशन देखना. Yeah, I've said that कि अगर रोनाल्डो नहीं भी खेल रहा है then he should be on the bench. कोई तो रीजन होगा ऐसे ही कोई ड्रॉप नहीं हो जाता या तो फिर वो सही में इंजर्ड हो यू नेवर नो ही माइट बी Yeah. इंजर्ड और हमारा चैंपियंस लीग मैच आ रहा है देन विद अ स्लाइट निगल राफ ड्रीन वांटेड टू टेक चांसेस विद हिम बहुत बड़ा मैच है अगेंस्ट एथलेटिको Maguire will be the savior. He'll keep the clean sheet. दो तीन power header with fridge head. Bhai, I trust Maguire as much as I trust Fred in defensive situations. ठीक है. I think that says it all. दिस इज अ गुड पॉइंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया है राज ने तो I think Amar, as I mentioned, it could be a double bluff. उसने रशफर्ड का mention किया. He knew that the news will leak out in one day or so. ठीक है. मैच डे पे लीक होगा ये चीज है और वो ये फ्राइडे कॉन्फ्रेंस हुआ था. So yeah, 2 दिन हो गए. Uh, so it could be a double bluff to mention that Rashford might start as a striker. Uh, could be. But then it's not that as something happened. जो कल हुआ है, it's something happened after Wednesday. Wednesday was the last day that Ronaldo was spotted training. तो Thursday या Friday में ही हुआ है जो हुआ है. Not Fred research. Fred, I don't want to start Fred. I don't want to start Fred. Fred के ए साथ issue ये होता है. मगवायर भाई ये सीरियस नहीं ले रहा है. मैं बोला आई ट्रस्ट हिम एज मच एज मगवायर उसका रिप्लाई दे रहा है. तू क्या सीरियस हो हाँ, गया? नहीं but still, Fred मुझे नहीं लगता कि start करना चाहिए. I don't see him starting. Okay, guys, thank you so much for tuning in. Just want to quickly mention one or two things. First, if you haven't subscribed, please subscribe and hit the bell icon because we are reaching very close to 200 subscribers. We are 170 plus already. As and when we reach 200 subscribers, we are giving away free. It's a giveaway, a David Beckham 2002 player edition jersey. It's a wonderful jersey. ठीक है. एज कल मोहक ऑल्सो मेंशन, तुम कपड़े फाड़ दोगे, इतना प्यारा जर्सी है. बहुत ही प्यारा जर्सी है. कसम से बसड़ हो गई है हमारे बीच में कि किसको जर्सी ये चाहिए. पर इट्स फॉर द फैंस, अदरवाइज वी रियली वांटेड इट. सो प्लीज सब्सक्राइब. एंड अनदर थिंग, इफ यू वांट टू बी हियर, ये हमने प्लान नहीं किया था, शेड्यूल्ड नहीं था ये वीडियो. सो इफ यू वांट टू बी हियर फॉर आवर बेड टाइम टॉक्स व्हिच हैपेंस अराउंड 11 PM इन द नाइट, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे सोशल्स के थ्रू एंड विल मेक श्योर दैट यू आर हियर. वेदर यू आर experienced or not, we'll make sure that you are here. Last few comments. Sancho is the player to watch today. Definitely. He is in red hot form, and he won Player of the Month award as well for us. I think he's important. He is as important as Bruno today. रिवाज मैकटोमने का अभी तक कोई न्यूज नहीं आया कि ही इज नॉट अवेलेबल, तो वी आर अज्यूमिंग दैट ही इज स्पॉटेड इन द स्क्वाड, तो ही शुड बी अवेलेबल. Ronak says 80 million का बजट है. Take it with a pinch of salt, because it was with Champions League. Without Champions League बोल रहे 50 million का है plus player sales. Don't go into that. Don't worry about it.
पॉसिबल है दैट वी स्पेंड नेट स्पेंड जो हो वो 100-120 मिलियन का ही रहे with roughly three players coming in. Don't be surprised with that, but there are player sales as well. Don't worry about it. मेरे को नहीं लगता है कि it will be that restricted. Uh, yes, so as Red Angle mentions that it could be 150 million. Uh, so 150 million, या ये उतना ग्रॉस स्पेंड तो होगा ही होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस स्पेंड. नेट स्पेंड कुड बी अराउंड 100-120 मिलियन. गिव अवे रिक्वायरमेंट्स, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब. ठीक है, ताकि आप हमारे लिस्ट में रजिस्टर हो जाओ एज आवर सब्सक्राइबर. उसमें से देयर विल बी अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ वन पर्सन दैट विल बी गेटिंग द डेविड बैकहम जर्सी. सो या इट्स ओरिजिनल फ्रॉम द यूके. यहाँ के स्टोर से भी नहीं है. So yes, just subscribe, hit the subscribe button and you will be eligible. Thank you guys, thank you so much for tuning in today. एक लास्ट कमेंट हम टेकिंग. वॉच अलोंग होगा मोहक भाई के चैनल पे, आ जाओ. लेट्स सी क्या प्लान्स है. वी हैव नॉट डिसाइडेड येट. विल बी डूइंग अ प्री मैच शो. वॉच अलोंग का वी आर नॉट श्योर. Thank you so much, everyone. Thank you so much for tuning in. I have a strange feeling that we are not losing tonight. We are not I have a losing feeling they are tonight. going to We win. might I have a feeling they are going to win. scrape a win. Yes, yes. That's a strange feeling, but I think we'll win tonight. Have a good day, guys. See you at GG, bye. 9 p.m. 9. Good night, guys. Good day. ये नाइट का आदत है ना मैच करने का, ये पॉडकास्ट करने का. नाइट ही निकलता है मुंह से. Okay, bye guys.